brief introduction about Career Guidance Council. This is a not non-profit organization formed in 2008, and it is helping to the young professionals, students for seeking the job opportunities. Along with that, students can get career guidance here. So if anyone wants to get uh, appropriate help, they can come here. Okay, so I'm very thankful to the Career Guidance Council that they have given me this opportunity. Okay, so let us directly uh, go into our today's topic. So first of all, so many professionals today they end up paying more taxes. Okay, in the form of TDS. Every month it will be deducted on their pay slip, and it is very disheartening that at the end of the means once they receive the salary, they will come to know that that much TDS has deducted. Okay, उससे पहले उनको पता नहीं लगता है कि कितना TDS कटा है या फिर how much it is going to be deducted. Okay. So, say let us first of example we'll take some examples here. What do you mean by tax planning? Okay, and tax avoidance and tax evasion. Okay, these three concepts are very important here. Okay, so tax planning is what we are going to discuss today. Khalid bhai, your voice is little bit breaking actually. Okay, is it now okay? Yes, better. Yeah. So let me again tell that we are going to discuss these concepts today. Okay, one by one we'll cover all the things. So first is tax planning, tax avoidance, and tax evasion. Okay. So tax planning is nothing but we are going to plan in a legal way. Say example, investments, what investments to be done in the financial year so that we can tax. So those all exemption deductions we are going to cover today. Next is tax avoidance. So in an illegitimate way, so we are taking some help of the so, Khalid bhai, your voice is like fluctuating actually. We are not able to follow you. Yeah, 1 minute. It's fine. I don't know what is happening. Is it okay now? Hello. Yes. Please continue. Yeah. So tax planning is what? Okay, we need to make proper investment decisions. Okay, proper investment decision. Okay. Next, tax avoidance is nothing but we are showing less income. Okay, that is not admissible in the eyes of law. Third is tax evasion. Tax evasion is like we are trying to take help of income tax loss and showing less income. Okay, so you can see here. So tax planning. Okay, this is tax planning. So say example under ATC, you have made certain investments. Then tax evasion and tax avoidance. So I'll take one illustration. With the help of that illustration, we'll cover all the points. Okay. So what if I say that up to 16 lakhs of CTC, okay, you can end up paying no taxes. Okay. Anyone is having doubt till now? You can please unmute yourself and talk. I think we can go. So you see, I'll show you one example with the help of Excel. So say example 16 lakh CTC is there. Someone CTC is 16 lakhs. Okay. So first right away on the 16 lakhs, what employer will do is 12% and PF they will contribute almost this 12% of basic. So 96,000 right away will go there. So you will get only 15 lakh 4,000 amount in your hand. Okay, this is employer's contribution. Employers, not employee, employer's contribution. Okay. So right away 12% will go as exemption. Okay. So you will get only 15 lakh 4,000 in your hand. So now 15 lakh 4,000. The first thing is see you can take a help of HRA, house rent allowance. Basically, house rent allowance. See this you can consider this as your salary structure. Okay. Basic is 8 lakh. That is 50% of as per new wage labor law. 50% should be the basic salary of your CTC.
And next is house rent allowance. House rent allowance, they normally it will be 40% of your basic salary. So there is a condition, three conditions are there for house rent allowance. This one is 40% of salary for non-metro cities. So here our salary is 8 lakhs. 8 lakh का 40% बन गया यहाँ पे 3,20,000. The next is rent paid minus 10% of salary. So say example, you are paying 40,000 per month as rent, and 10% of salary is here 80,000. So 4 lakh आपका rent paid B section बन गया. Then actual HRA receipt. Actual HRA आपने अपने हो. So whichever is lower you have to consider. These are the three conditions you have to meet for calculating house rent allowance. So here आपका 3,20,000 आपका house rent allowance है, that we are considering here 3,20,000. So it is a like a major tax component you can save here, okay, with the help of house rent allowance. So यहाँ पे क्या होता है, most of the cases employees they don't submit their rent bills or rent agreements. So if anyone is paying more than 1 lakh rupees per annum, okay, they have to submit PAN number of their landlords. Okay, if it is less than 1 lakh, then no need to pay, no need to disclose the PAN numbers of landlords to the employers. So don't take this house rent allowance as an exception, because it is very important for all of us. If anyone is having doubt in house rent allowance, they can ask. Yeah, can you please come again on HRA? Like, yeah, HRA, I'll tell you first step by step. There are three conditions. Okay, 40% for non-metro cities, and 50% for metro. See, metro as per income tax is considered only for 4 cities. One is Delhi, okay, Kolkata, and Mumbai, and one more is there. Say, I think it is Chennai, right? So these 4 cities are considered as metro cities. Khaled bhai, maybe Hyderabad also it's under the metro city, right? No, actually it is metro city, but in income tax they have not updated their list of metro cities. So it was decided long back, I think 10 to 15 years back. So till they are following, still they are following these 4 cities as metro cities only. Okay. Yeah. So Hyderabad is a non-metro city. So it's in 40% of from actual salary or from the basic salary? It is basic plus DA. Okay, our basic salary is, for example, 8 lakhs. Okay, right. Of CTC. So इसका 40% बन जाएगा आपका 3,20,000. That is coming here 3,20,000. Okay. Yeah. This is first condition. Second condition is rent paid minus 10% of salary. Rent, say example, you are paying 40,000 per month. Yes. 4,80,000 इसका आ गया. Then आपका 8 lakhs your basic salary into 0.1 means 10%. Rent paid minus 10% of salary आपका 4 lakhs बन गया. Okay. This is second condition. Then third condition is actual HRA received. Means employer आपको दे रहा कितना है house rent allowance. House rent allowance यहाँ पर आपका 40% of basic दे रहा है employer. So that actual allowance you have to consider here. So out of these three amounts, whichever is lower you have to consider. So we are considering 3,20,000. Okay. I think I guess all doubts have been cleared, or if anyone is having, you can please tell me. So we need to mandatorily submit the HRA bill, or like these three are there. So like employee also gives some like component of HRA. These three condition, is it? No. So what happens? Employer will give you only amount. Okay, they will give you amount. आपको पैसा दे देगा employer. आप house rent allowance के नाम पे. Okay. मगर आपको whether you are paying it or not, or whether you are incurring it or not, that is up to you. Okay. For example, if you are staying with your parents, okay, you are not staying with in a rented premises, so you can make an agreement in the name of parents that you are paying rent to your parents also. Okay, that is admissible.
But the house has to be on the parent's name, or that is also not required. That is, you see, if, for example, it is a joint property or it is a gifted property, okay, but that's all things will not be considered in these sections because they will not go in details. Sometimes this dispute is there, okay, but income tax will not go in detail that much. If you submit to the employer, it is the responsibility of employer to verify. If employer agrees, okay, then you can submit anything to the employer. You can write on a single paper as a delivery challan or a payment receipt. If your employer accepts it, okay, then you can straight away submit. So it is very important concept for saving our income taxes. Okay. Okay. Almost 40%. Usual. What employers sometimes does is, at least in my company, they say that this all information is provided by the employee, so he is responsible. Something those sort of things they say. Sorry, come again. They say that this information is provided by this rent receipt and all is provided by employee, and if anything specifically what you call authenticity of this should lie with the employee. So what happens, I'll tell you. There were some case laws, okay, where employer tried to make all responsible things to the employee only, okay, but sometimes what you see in most of the cases, the employee whatever submits data, okay, so in most of the companies what they will do, they will do the audit of those bills, okay. So but if it is but ultimately it is the responsibility of employee to give genuine information. Sometimes if you submit it and employer accepts it, but tomorrow income tax department gives you notice, you cannot go to employer, okay, you have to give at your responsible, okay. So be genuine so that tomorrow you may not face any problem. got it. So just to confirm, last question is, so let us say I have a house and I can pay the receipt to my spouse, right? And I don't have to register my house to my spouse and all those things. Well, okay. So in that case, one more point I can cover is, say example, you are coming under 30% tax category and your spouse or your father or mother is coming under, say example, 10%, 5% category. So you can create agreement in the name of your family member and you can account here as HRA. You can give it to your employer that I'm paying rent to my spouse or my family member. It is admissible. There you can save taxes. Thanks. And next thing is children education. It is like for 2 childs, it is admissible 100 rupees per month. Okay. 100 into 2 into 12. So it is admissible up to 100 rupees. And this is a children hostel allowance, not much many amount, but 300 rupees per month per child. And another amount is leave travel allowance. So, say example, you have traveled during your vacation to somewhere domestic in India only. Okay, so you can claim it twice in 4 years by air, by train, or by bus. So, but the condition is 2 times in 4 years, in a block of 4 years. Okay, you have to keep your bills so that you can tomorrow produce in front of income tax authorities if they ask it. So this point will cover. This is the advantages. Okay. For this also, you have to keep all the bills. I'll show you the breakup. For example, you are having a subscription every month. You are getting books and periodicals. So that cost is around 2,000 per month. Magazines and journals. For example, daily allowance from homework. Say from work from home is going on. You are paying electricity bill, and you are paying internet charges. Like that, cost you can claim it as allowance. Transportation allowance is 1,500 rupees per month. Next is expenditure incurred on place other than office place, like you have gone somewhere for office purpose, that expenditure incurred. Anyone is having doubt in allowances? Yeah, Khalid, so this all things should be a part of the component. Company should be providing this, or we can claim this while filing the ITR. Yeah, so I'll tell you, company ask employee
to submit their tax operating plan. Okay, what is the plan of employee? So at that time you can submit that this is the expenditure you are going to incur. Okay, you can submit only the plan, but at the time of submitting ITR, you should have this all the bills with you available. Otherwise, tomorrow if you get any notice, if you don't have any evidences, then you cannot claim it. They will ask you to submit bills. Right, but few companies they don't have this component at all in while asking for the investment plans, like magazines and journals which we are showing here. Yeah. We don't see it into our investment declaration. So I'll can we tell you claim one this? thing. I'll tell you one thing. I'll show you one salary structure here. For example, you are getting special allowance, okay, and you are getting other allowance. So example, this component is there in your salary CTC, okay. So if it is there, even though company is not accepting it, you can claim it at the time of filing ITR. Okay. That option Under is which section do we have to file that? this is under section 10. All right. Under section 10, one section means under one criteria you will find here. They're in ITR. Okay. Thanks, Khaled. It is important. 1,47,000 you can claim here. And next is deductions. We are going to talk about deductions here. So this is a gift. This is a gift from IT authority. Why I'm calling as a gift is ये 50,000 आपको straight away deduction मिल जाएगा. Okay. No need to panic about it. Next is loss from house property. This also you can claim. So से इसका concept मैं आपको थोड़ी देर में बोलता हूँ. जब तक अपन दूसरे points cover करेंगे. So this is the investment under section 80C. You can claim up to 1.5 lakhs. So यहाँ पे क्या है कि next first आपका employees contribution जो PF में आप contribute कर रहे हो वो cover होता है यहाँ पे. Okay, next is public provident fund में कुछ amount आपने invest किया है वहाँ से आप you can claim it. Home loan है, employee linked savings scheme है, life insurance premium है, Sukanya scheme है. Sukanya मतलब if you have daughter and you are opening an account in the name of your daughter, so that you can claim here. Tuition fee है, national pension scheme है. So these all put together up to 1,50,000 maximum amount is maximum limit. ट्यूशन फी यहाँ भी है और वहाँ भी दोनों अंडर 10 में भी है. नहीं, I'll tell you. ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये स्कूल फी ट्यूशन फी है, ये एजुकेशन अलाउंस नथिंग बट इसके लिए आपको बिल सबमिट करने की जरूरत नहीं है. ये 100 रुपीज आपका हक है, योर राइट है. आजकल 100 रुपीज में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. ये मिनिमम अमाउंट है, बट हियर ट्यूशन फी यू कैन क्लेम हियर. ओके. एटीसी में किसी को डाउट है आपके पास? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. ये एसएसवाई जो है ये लिमिटेड टू वन डॉटर और ऐसा कुछ है इस पे कुछ कंडीशंस है? ओनली लिमिटेड डॉटर ओनली. समृद्धि सुकन्या स्कीम है ये. ओके. गवर्नमेंट स्कीम है, यू कैन इन्वेस्ट. अभी कुछ लोग बोलते हैं कि से एग्जांपल उनका पीएफ 12% ऑफ बेसिक है. ओके, तो उनका बेसिक कितना है यहाँ पे 8 लाख से इंटू 12% हो गया 96,000 हो गया. अभी और कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे 1.5 लाख गेट करने के लिए? मतलब ट्यूशन फी होता है एग्जाम्पल, ट्यूशन फी हो गया 60,000 रुपये. दिस प्लस दिस कितना हो गया 1,56,000, बट यू कैन क्लेम अप टू 1.5 lakhs ओनली. ओके, आपका लिमिट हो गया. देन अभी हाउ टू सेव अगेन टैक्सेस, सेव करना है टैक्स आपको. तो ये वन मोर ऑप्शन इज देयर, नेशनल पेंशन स्कीम. इसमें आप एडिशनल 50,000 यू कैन इन्वेस्ट किया 50,000. तो टोटल आपका लिमिट 2 लाख हो जाता है. एटीसी का लिमिट हो जाएगा 2 lakhs. 50,000 you can spend, invest it for a period of around I think 5 years. You cannot withdraw that amount again. The national pension scheme, this is employer's contribution. For example, you can up to 10% of your net salary you can tell to employer to invest in, but the problem is they will invest from your income only.
and that you can claim here. So आपके इनकम में से पैसे माइनस हो जाएंगे. So ये other than ATC रहेगा या NPS? Yeah, other than ATC NPS. ये एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है. ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है. ओके. नेक्स्ट है आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर आप सेल्फ के लिए लिए आपका तो 25,000. ओके. सेल्फ है, इसमें स्पाउस है, 1 चिल्ड्रन, 25%. अगर आपके पेरेंट्स के लिए भी लेना चाह रहे हैं आप, then it will increase 50,000. means 50,000 claim है. तो कितना claim होगा? 75,000 है. अगर पेरेंट्स के लिए लेते हैं तो will cover that part also again. Next is 80 interest on education loan 50,000. अगर आपने कुछ लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अंदर 80E. एजुकेशन के लिए लोन लिया है तो, अगर होम लोन लिया है तो फिर क्लेम कर सकते हैं 80EE के अंदर. और कोई आपके सेविंग अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट आ रहा है then 10,000 आपको 10,000 यू कैन क्लेम एज एक्सम्पशन. सो ऑलमोस्ट आपका नेट इनकम 2,94,480 हो गया. ये जो गिफ्ट बताया आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये ऑटोमेटिकली ये कंसीडर कर लेते हैं फॉर्म 16 में एम्प्लॉयर, या हमें फाइल करना पड़ेगा अलग से? ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड इन इनकम टैक्स. ओके. ऑटोमेटिकली मतलब ये आपका राइट है. अगर आप इवन दो इफ यू डोंट वांट टू कंसीडर, इट विल बी कंसीडर्ड इन योर ITR. ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है. स्टैंडर्ड मतलब विदाउट एनी you say no need to submit any bills or like that, it is standard deduction. अच्छा, तो जो टैक्स कैलकुलेट फाइनल करता है ITR, हाँ. उसमें ये ऑलरेडी कंसीडर रहता है ये. हो जाता है, राइट. ओके. अभी एक क्वेश्चन आपको ये पूछूंगा मैं आप सबको कि आप सब लोग को मैं एक सेक्शंस बताया अभी, ठीक है. इसके बाद में आप क्या, ये टेक होम सैलरी आपका ये बन रहा है. आप कोई भी मुझे ये पूछेंगे कि आई एम हैविंग CTC of 16 lakhs but I am getting salary of only 2.9 मींस अब 3 लाख रुपए मुझे मिल रहा है, तो पूरा का पूरा मुझे इन्वेस्ट या फिर मुझे टैक्स बंद देना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, ऐसा क्यों बोल के पूछेंगे आप. कोई पूछ रहे, किसी के माइंड में डाउट है? ये तो बहुत कम हो गया फाइनली. बहुत कम हो गया. अभी क्या है कि 2.3 लाख रुपए यहाँ पे आया. 5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं, अप टू 5 लाख. फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इसका सैलरी अपना इनकम टैक्स स्लैब है, ये अप टू 2.5 लाख नील. 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख से 20% है. तो अपना जब आया है ये ब्रैकेट में सेकंड कैटेगरी में आया हमारा, एंड इसमें हमको रिबेट मिल जाता है 87A का रिबेट मिल जाता है कि इफ योर इनकम इज लेस देन 5 लाख देन आपको एग्जम्पशन मिल जाता है. नो नीड टू पे सिंगल पेनी टू द इनकम टैक्स. ओके. तो समवन इज हैविंग डाउट कि मैं इतना इन्वेस्ट कर दिया हूँ, इतना खर्चा कर दिया हूँ, देन व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, इतना अमाउंट लेके मैं क्या करूंगा फिर अगर सैलरी में से पूरा अमाउंट चल जाएगा तो. I think everyone is having doubt but no one is raising the question. Yes, we have. So now we'll go into some reality. Okay, what is the possible? Whatever you have, I have a question. Whatever you have done, Yeah. Or shown the calculation, that is for the deduction. That deductions will get nullified from the gross salary, if I'm not wrong. Yeah. So you see, gross salary is here. Okay, and whatever deductions I'm showing, that is getting deducted from your gross salary, and you are left out with only net income. This is your net taxable income. So ultimately, if you are considering these all deductions, means you are somewhere you are paying this amount. Okay, right? No, so this 3 lakhs is whatever the amount. Yeah, I'll Okay, go good. into some reality. You will come to know if I'm correct. Okay.
So first of all, we will cover this income also, income from house property. How you can claim 2 lakhs loss here, that will cover here. Okay. So example, you have one house. Okay. Let me do it. So you are having one house. Okay. So उसको आपको we have to consider, it is not a let out property, it is you are staying at, you are having 2 houses. So if you are having house, you have to consider mission income. Mission income concept आएगा यहाँ पे. For example, 30,000 is your per month rent. That is notional income. You have not given it for let out property. आप उसको rent किराए पे नहीं दिया है, मगर you are facing this loss because you are staying in the same house. अभी आपने municipal taxes पे किया है. ये कंसीडर कर पाएंगे कि मैं आप सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी आप उसी में रह रहे हो. ओके. देन आपका क्या डिडक्शन है 50%. इनकम टैक्स की तरफ से भी गिफ्ट है. Then you are having income this much. आपका वो टैक्स कैलकुलेशन का स्क्रीन शेयर्ड है, दूसरा वाला नहीं दिख रहा. Okay, 1 minute. It is अभी दिख रहा है आपको? हाँ अभी दिख रहा है. ओके. ओके. तो जी आपका नेट नोशनल इनकम इतना आ रहा है 2,26,000. अभी आपने लोन लिया है. लोन लेने के बाद में आप लोन से एग्जांपल कितना लोन लिया है आपने? 4 लाख का लोन लिया है. इंटरेस्ट आपने इतना पे किया है 4 लाख का. तो आपको इसमें माइनस करें तो आपको 1,73,000 से लोन आपका 5 लाख कर देंगे. 2,73,000 का लॉस है यहाँ पे. ओके. ये लॉस आपको 2,73,000, बट इनकम टैक्स वाला बोल रहा है कि अप टू 2 लाख यू कैन क्लेम एज लॉस. अब किसके लिए बेनिफिशियल है? जिसने लोन लिया है उसके लिए बेनिफिशियल है. लोन नहीं लिया है तो ये 2 लाख का पॉसिबल ही नहीं है लॉस लेना. तो ये 2 लाख का लोन हमने लॉस यहाँ पे ले लिया है इधर. खालिद भाई ये लोन जो है पर्सनल लोन रहेगा या फिर ये होम लोन है. ये नॉट पर्सनल लोन, होम Okay. लोन. You have taken it for the purpose of your home. अभी now we'll go into some again we'll go in detail. कि अभी किसी को भी डाउट आएगा कि 2 लाख 3 लाख रुपए मुझे मिलेंगे तो मैं क्या करूंगा बोल के. Okay. So we'll show some reality here. So HRA तो आप पे कर दिए यहाँ पे. That is the anyhow it is going out of your pocket. उसको हम कम नहीं कर सकते. से एग्जाम्पल ये एजुकेशन अलाउंस निकाल देंगे, उसमें से कुछ इम्पैक्ट गिरेगा ना, ये भी निकाल देंगे. अब ये तो आप ट्रैवल कर रहे हो तो लेना पड़ेगा. अब अलाउंसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं. दिस मेनी अलाउंसेस यू कैन क्लेम इफ यू आर हैविंग बिल्स. अब दैट इज इनकर्ड और नॉट, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन. वी विल कंसीडर दैट इट इज इनकर्ड. सो नेक्स्ट ये डिडक्शन तो गिफ्ट है. से एग्जाम्पल आप लोन नहीं लिया है, एग्जाम्पल लोन नहीं लिया, कंसीडर नहीं कर रहे एग्जाम्पल. ये तो एटीसी आपका पूरा पीएफ में चले जाएगा. 90,000 पीएफ में जाकर ट्यूशन फी जाएगा. एनपीएस 50,000 आप कर रहे हो एग्जाम्पल, कंसीडर कर लेंगे उसको. से यहाँ पे आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कम कर दिया आपने, 40,000 कर दिया आपने. ओके. मेडिकल इंश्योरेंस आप क्या करेंगे? पेरेंट्स का भी ले लेंगे एग्जाम्पल. ये एनपीएस एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है, वो समझा नहीं. लाइक डू वी नीड टू अप्लाई टू द कंपनी है वो एम्प्लॉयर? मैं आपको बोलता हूँ, गिव मी 1 मिनट, मैं एक थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ. सो मेडिकल इंश्योरेंस आपने पेरेंट्स का भी ले लिया है, सेल्फ प्लस पेरेंट्स एग्जाम्पल. अब लोन आपने लिया नहीं होगा, आपको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, कहाँ से लोन लेंगे आप? माइनस कर दो उसको भी. अब आपने होम लोन ये भी नहीं लिया एग्जाम्पल, कम कर दो. तो आपका 6,11,800. अब इसमें से आपका अप टू 5 लाख तो नहीं ले, तो ऑलमोस्ट आपको आएगा इसमें टैक्स
20%. आपको 34,000 के आसपास टैक्स आएगा। अब उसको भी कम कर सकते हैं आप चाहे तो। एग्जाम्पल यहाँ पे अलाउंसेस में जाने के बाद में यू कैन ऐड वन मोर अलाउंस हियर। से यू आर हैविंग ड्राइवर, यू आर पेइंग सैलरी ऑफ ड्राइवर 9,000 पर मंथ इंटू 12। आप सैलरी पे कर इसको, ये सैलरी दे रहे हो, आपके पास ड्राइवर है, इसकी सैलरी का एक्सपेंडिचर कैन क्लेम हियर। तो 5,03,000 अभी और 3,000 रुपये कम करिए तो आपका टैक्स बच जाएगा। से एग्जाम्पल आप इधर 45 कर देंगे नेक्स्ट, अभी बच गया। हाँ अभी किसने पूछा था डाउट? कोई किसी ने पूछा था ना एनपीएस का। हाँ मैंने पूछा था। So you see, I'll tell you one thing. एक है पीएफ, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय, दोनों भी कंट्रीब्यूट करते हैं। और एम्प्लॉयर का जो था स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आपको, यहाँ एम्प्लॉयर का ये है, ठीक है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कट के आपके हाथ में आएगा पैसा, तो आप पहले ही कंसीडर कर लिया हमने नेट सीटीसी में, ग्रॉस सैलरी। ओके, और जो बचा एम्प्लॉय का वो भी सिमिलर कंट्रीब्यूट करता है। ये हो गया। नेक्स्ट अभी 96,000 हो गया। मगर दूसरा क्या है? एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इफ एम्प्लॉय वांट्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय बोल रहा है कि आई विल इन्वेस्ट 50,000 इन्वेस्ट करूंगा मैं, एम्प्लॉय बोलता है आई विल आल्सो इन्वेस्ट 50,000 फॉर यू। ओके, सो 50,000 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट हो रहा है, बट दिस ऑल 50-50 इज गोइंग इन out of your salary only. Company is not paying out of their pocket. ये 50 यहाँ बता रहा हूँ ना आपको मैं, ये 50 ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 40% की जगह पे दिख रहा है। और ये जो 50 है, ये 50 यहाँ से आ रहा है, ये 50। I guess you got the point. खालिद भाई, वो जो 1,47,000 जो आपने अंदर सेक्शन 10 के अंदर डिडक्ट कराया, उसको जरा फिर से एक बार रिविजिट कराइए। कौन सा बोले आप? हॉस्टल वाला था, जो होम वर्क फ्रॉम होम का जो सेविंग था, दूसरा वाला शीट। अलाउंसेस, ओके, हाँ ये वाला, इसमें बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये पहले था, अब तो शायद ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल बिल को उन्होंने खत्म करके स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया ना, कुछ 40,000 ऐसा। कहाँ पे? ये वाला नहीं, पहले ये ट्रांसपोर्टेशन जो था पहले, ये कुछ तो 800 रुपये समथिंग जो पुराने रूल्स में था, वो अभी भी वैलिड है क्या? अभी 1600 हो गया है ना वो। हाँ वैलिड है, अभी वैलिड है वो। 1600 अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ 40,000 का दे रहे हैं कंपनी में, कुछ भी। 40 जो था लास्ट 2 इयर्स पहले अपडेट हो गया, वो 50 हो गया अभी वो। अच्छा अच्छा, तो इसमें मेडिकल का बिल जो पहले हम लोग देते थे वो सब अब नहीं देना पड़ता है, जो मेडिकल बिल था पहले? मेडिकल बिल आपको जो देना पड़ेगा वो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए देना पड़ेगा उसको। हाँ, इंश्योरेंस का नहीं, पहले कुछ था ना, जैसा हेल्थ के लिए आप मेडिकल, जो भी आपका मेडिकल एक्सपेंसेस था, ओपीडी वगैरह का, वो भी पहले अलग से सबमिट करने से मेडिकल का मिलता था पहले, कुछ तो वो क्या लिमिट है, था उसमें। दैट इज टेस्टिंग एंड से मिनिमम चार्जेस 5,000 रुपीज आता है, उसका अलग अमाउंट नहीं आता। मेडिकल अलाउंस जो बोल रहे हैं आप, एग्जांपल मेडिकल अलाउंस इज इंक्लूडिंग। अच्छा, तो इसमें और क्या क्या, ड्राइवर्स का भी आपने जैसे डाल लिया, इतना एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्लेसेस अदर देन ऑफिस प्लेस से, ये सब में क्या डाल सकते हैं इसमें? मैं बोलता हूँ अभी एग्जांपल देखिए, ये दीज आर पार्ट ऑफ अलाउंसेस। ओके, अलाउंसेस कैन बी क्लेम्ड, दीज हाँ, अलाउंसेस कैन बी क्लेम्ड सब्जेक्ट टू बिल्स अवेलेबल। ओके, आपके बिल्स नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ओके, क्या आता तो है बिल हमें दोबारा? कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा? नहीं, कंपनी को आप ओनली यू हैव, इफ कंपनी आस्क यू देन यू नीड टू सबमिट। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी क्या पूछती है, खाली आपका प्लान सबमिट करने के लिए बोलती है। ओके, सो Khaled, one question about the driver's salary. What am I supposed to submit? I mean, is it just like a signatured paper that we have to submit in case the company is asking me? yeah, so in most of the companies what they will do, they will accept one simple format
Okay, if you are taking the receipt of say bill के ऊपर आप signature ले लिए सर driver का, okay, that is enough here because you are not running any organization, so you cannot pay, you cannot give some, you cannot produce some bills, Mhm. so that is sufficient here. Got it. So आप जो medical allowance का बोल रहे हैं, if company is giving you separately in salary, then you can claim it. सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे स्पेशल अलाउंस के नीचे मेडिकल अलाउंस भी मिला हुआ दिखा आपको यहाँ पे, तो यू कैन क्लेम इट. तो हियर बुक्स एंड जर्नल्स का बिल मिल जाएगा आपको, इसका बिल मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोले तो आपका पेट्रोल बिल. Bhai, I have one doubt on transportation allowance. Yeah. Yeah, like in my CTC, I see transportation allowance is there, but if I'm opting for company transport, so can I still be able to claim this transport allowance? You are talking about going to company and coming from company, right? Yeah, both the But routes. you are going somewhere for the work of the company, and that play at that time Okay. you can claim it. Okay. That is possible. So example here, this is covering here also, expenditure incurred on place other than office place. So आपको कोई इसे कोई other than company's office, you are going to somewhere, and that is for the purpose of company, and you are paying out of your pockets, then that also you can claim. So example here parking हो गया, या फिर नहीं, जैसे डेली जैसे हम लोग अप एंड डाउन करते हैं कंपनी को, but like आप daily up and down कर रहे हो, if company is giving you bus facility, then you cannot claim. okay, Yeah, facility, then you cannot claim because you are not incurring any expenditure here. yes, yes. Company is incurring, company पैसा pay कर रहा है ना वहाँ पे. Mm-hmm. So I'll, Okay. what I'll do, I'll give you just a snapshot here by whatever PPT I have prepared. Then we'll cover all the questions here. Then, okay. This is salary, okay, slab. Income tax rates as per slabs, okay. For this is for persons who are less than 60 years of age, okay. And this is for old tax rates. New tax rates भी आए, मैं बताता हूँ आपको. Old regime and new regime. वो next slab में तो होता है. For senior citizen, super senior citizen. यहाँ पे 3 लाख तक आपको नील है, यहाँ आपको 2.5 लाख तक नील है. यहाँ पे 60 इयर्स के ऊपर है 3 लाख तक नील है, 80 इयर्स के ऊपर है 5 लाख तक नील है आपको. दिस इज सरचार्ज, नॉट मच इम्पोर्टेंट. ये 50,000 जो बोला आपको गिफ्ट, ये सेक्शन में कवर होता है, वो 16(1)(a). This is 80C. We discussed this 80C, okay, 1.5 lakh. Then 80D, double D is मतलब disabled dependent. So example, not by the grace of God. अगर कोई आपका फैमिली मेंबर जो डिपेंडेंट है, तो उनको भी आप कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे. लेस देन 40% डिसेबल है तो 75,000, इससे ज्यादा है तो 1,20,000 क्लेम कर सकते हैं आप. ऑल आर सेक्शंस. 80G है, कोई आप चैरिटी दे रहा है किसी को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक सीजीसी को कोई चैरिटी की आपने, तो 80G सर्टिफिकेट सीजीसी देगा आपको, वो क्लेम कर सकते हैं आप. अगर पॉलिटिकल पार्टी को पे कर रहे हैं आप, देन आल्सो यू कैन क्लेम, बट कंडीशन इज यू नीड टू पे इन नॉट इन कैश, ओके. पॉलिटिकल पार्टी को पे कर रहे हो. ये सेविंग अकाउंट के लिए है 10,000. ये 80U is nothing but it is you for yourself. If you are disabled, same conditions apply here. The allowances we discussed. This one discussed HRA. This one house property के लिए बताया आपको मैं. This is new slab, okay. If anyone is opting for new regime, they have to follow this. यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि if you follow this
rates, then you cannot claim any exemptions or deductions. If अगर किसी को बोलना है कि भाई I don't want to maintain any bills, I don't want to claim any deductions or exemptions, then you straight away you can follow this tax rate, new tax rates. यहाँ पे problem क्या है कि आपको you have to pay, you will end up paying more taxes because you see यहाँ पे आपको 2.5 लाख से 5% टैक्स, 10%, 15%. So यहाँ पे कुछ भी डिडक्शन एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा आपको. Any doubt? खालिद भाई, डाउट है खालिद भाई रिगार्डिंग मुझे एचआरए का मुझे कंफ्यूज है आपका एक्सेल शीट ओपन करिए एचआरए में. चलिए आपको एक्सेल में बताऊं, आप बताओ आपको. नहीं एक्सेल में बताइए. Okay. फॉर एग्जांपल मुझे समझ नहीं आया पे अगर एम्प्लॉय का ओन हाउस है तो एचआरए का अमाउंट क्लेम नहीं कर सकते. अगर ओन हाउस है यहाँ पे आपका, ओके जी ओन हाउस है, you are paying because you are staying in your own house, यस सर. but you are receiving HRA, हाउस रेंट अलाउंस. तो कंपनी देगी ना, कंपनी तो नहीं देगी बोल के नहीं, कंपनी देगी आपको. सैलरी स्ट्रक्चर में इंक्लूड है. इतना देर आप कंपनी इज पेइंग यू 3,20,000 as HRA because uniformity is there for all employees. तो अब क्या करोगे आप? Will you claim it or not? Tell me. नहीं मैं तो क्लेम नहीं कर सकता. क्लेम तो अब आप बोलना कोई तो ओन हाउस क्लेम तो कर सकते नहीं कर सकते विद डाउट है. You have to claim. How you will claim? Does it come under like loss on house property or the calculation that you have said previously? No, that I have explained you. If you have any loan, if you have taken loan for a house property, okay. Okay, maybe we can show that we are paying rent to our parents or spouse. Yeah, we'll wait for 2 minutes.